everyone. Welcome to Pranjal Arts. We are so glad to have a very esteemed artist with us, Mr. Mustaq Khan Chaudhary. We also have his paintings in our collection, and we are so excited to have a conversation with him to know more about like his journey and his challenges, his experiences, and how his work has changed since the past 10 years. So many questions, and I think I'll start with just asking Sir to briefly tell us about himself and introduce to the audience. Hello, good evening, everyone. Okay, I am just pass out from Santiniketan 1988. I've done from 1988 master degree from Santiniketan, and same year I joined Sindhya School Gwalior. So right now I am actually Madhya Pradesh based artist. Actually, most of the time I have worked here in Gwalior, Madhya Pradesh, and Sindhya School, and I exhibited from the as a Madhya Pradesh artist also. Okay, so the first exhibition, Mr. Alkaji Ibrahim Alkaji, very well-known art collector, and he's actually basically theater person. He's the father of theater in India, and from NSD. Yes, sir. So just to Mr. Alkaji, I have been in. I was only 22 years old that time, and I had that time there was no CD, nothing computer work. Okay, we had a slides. Okay, and my friend, he's a photographer friend. He has done some slides for painting. So I have gone Delhi and I offered Mrs. Alkaji to. So I am the artist and I want to exhibit my work in your gallery. So she told me, so this is not the process. You come through channel. Okay, you have to write the application and you send this. I told her, well, I am coming from very long process. Maybe I will not come in Delhi. That time, दिल्ली जाना आना बहुत डिफिकल्ट था एज ए यंग आर्टिस्ट लोगों के लिए. तो मैंने बोला मे बी आई विल नॉट कम अगेन, जस्ट यस सी माई स्लाइड्स, आप मेरा स्लाइड देख लो, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप छोड़ देना, आई डोंट माइंड दिस. ठीक है, तो बोला कि तो ओके लेट्स सी. एंड मिसेस रोशन अलकाजी, शी नो मोर राइट नाउ, तो उन्हें देखा एंड बोला कि कीप योर स्लाइड विथ मी एंड राइट एन एप्लीकेशन. फिर उसके बाद मुझे 90s में हमको एक शो मिला दैट इज वेरी प्रेस्टिजियस फॉर मी एंड फ्रॉम देयर फॉर फर्स्ट शो इन अलकाजी विद अलकाजी सोलो एग्जीबिशन आई हैव गॉट. और उस टाइम में आर्ट हेरिटेज बहुत बड़ा प्रेस्टीज माना जाता था, तो उससे मुझे बहुत एनकरेज मिला काम करने का. एंड उसके बाद से मैंने आई हैव डन 8 सोलो एग्जीबिशन विद मिस्टर अलकाजी, है ना, आफ्टर 1 ईयर यस. एंड फिर कलकत्ता में सीमा राखी सरकार शी इज ऑल्सो द आनंद बर्गर पब्लिकेशन की जो ऑनर है, सीमा आर्ट गैलरी, उसमें उन लोग भी स्पॉन्सर की. फिर वहाँ पे राइट लाइन आर्ट गैलरी फ्रॉम बैंगलोर एंड नीरू ऑल्सो, योर ब्रदर ऑल्सो यूज टू कम हेयर, है ना. तो नीरू ऑल्सो अरेंज वन वर्कशॉप, है ना, in Bangalore, and we have there many artists also. And Sindhya School में भी उस टाइम में नीरू एंड सर ये लोग ने काफी वर्कशॉप कराए, इससे भी बहुत सारे आर्टिस्ट आने लगे एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस. Yes, sir. In Mysore, I think they did. हाँ, बेंगलोर मैसूरू, यस यस. And हाँ, सिंधिया स्कूल में भी काफी वर्कशॉप कराए ये लोग, दैट इज गुड. एंड ITM यूनिवर्सिटी में रामाशंकर सिंह ऑल्सो वेरी वेल नोन एज आर्ट कलेक्टर एंड आर्ट लवर, एंड वहाँ पे भी किए हम लोग काफी. उसके पहले हम लोग किए थे भरत, अपने जो है जो दिस आर्ट सेंटर इन ग्वालियर, पदप के पास नहीं है, कलाभिथिका. हाँ, बहुत पहले बिमल कुमार, अनिल कुमार के फादर थे बिमल कुमार, वेरी अर्ली व्हेन आई जॉइंड. हाँ, तो उस टाइम में
मिस्टर अशोक वाजपेयी, है Okay. ना? हाँ, he is a IAS officer he was, and he arranged one workshop there, तो सर कलाविति का। यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप, लाइक स्टार्टिंग से बताइए कि शांति निकेतन से पहले आप कहाँ थे, आपका अर्ली हाँ, इन्फ्लुएंसेस। अर्ली आई बिलोंग, हाँ, हमने मालदा में रहता हूँ, शांति निकेतन से 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम शांति निकेतन, ठीक है? तो हाँ, आई बोर्न एंड ब्रॉट अप इन विलेज, ओके। तो मुझे आर्ट के बारे में मैंने छोटे से जब देखते थे, एक फ्रेंड था मेरा, वो पढ़ता था पहले सीनियर स्टूडेंट्स, तो तब से मुझे शौक हुआ, लेकिन मेरे फैमिली वाले उतने मैंने राजी नहीं थे, क्योंकि उस टाइम में आर्ट को उतना अच्छा नहीं माना जाता था। सब लोग बोलते थे, ओए आप दूसरे इसमें जाओ, आप इसमें क्या कैरियर है, हाँ, व्हाट यू विल डू आफ्टर डूइंग, एंड गेटिंग एडमिशन आल्सो शांति निकेतन इज नॉट वेरी इजी, ठीक है? क्योंकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां पे सिर्फ 12 सीट है ना, बच्चे लोगों का, हाँ, जो ऑल ओवर इंडिया। मेल, all over India only 12 seat for male child, male boys, and female girls के लिए, है ना, 12 सीट है, टोटल 24। और उसमें से भी आउटसाइड, जो आउट ऑफ स्टेट्स जो है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, उनका भी कोटा है एक एक करके, अच्छा। और इंटरनेशनल स्टूडेंट का भी है। तो गेटिंग एडमिशन इज वेरी वेरी टफ शांति निकेतन उस टाइम में भी, तो है ना। तो मैंने तो कोशिश कर लिया था, हमने अपना कॉलेज छोड़ दिया आफ्टर। अच्छा, हम जब पास आउट किए थे उस टाइम में शांति निकेतन में आफ्टर 10th भी एडमिशन होता था। राइट नाउ क्लास 12 करके होता है, उस टाइम में तो आई ज्वाइन वेरी अर्ली, है ना। 16 साल की उम्र में मैं 10 पास किया था, 10 पास के बाद ही मैंने ट्राई किया, एंड आई एम वेरी लकी बोलूंगा मैं इसमें। So, तो sir, how did you decide that you want to do this only? And like after 10th, it's such an early time to decide that, okay, now I हाँ, am an artist. एक्चुअली मुझे, मेरी दीदी रहती थी ढाका में, ठीक है? तो हम एक बार ढाका गए थे मिलने के लिए, वहाँ के जो बहुत वेल नोन आर्टिस्ट थे मिस्टर जमाल, ढाका यूनिवर्सिटी के, वो उनके, मेरी दीदी के पड़ोस में रहते थे। तो हमने उनको जब विजिट करते थे छोटे में, आई वॉज वेरी चाइल्ड, मुझे तब से मुझे इंटरेस्ट हुआ जो आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट, ठीक है? एंड वो मैं देख के इंस्पायर हुआ, और मैं तभी से मन मन में मैंने सोच लिया था, दो इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन विलेज, क्योंकि सारे चीज नहीं मिलते, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आपको कोई समझने वाला नहीं है ना। आर्ट सब थी वहाँ पे विलेज में उस टाइम में, आज से मतलब ऑलमोस्ट 35 इयर्स बिफोर, और तो लोग को इतने अवेयरनेस नहीं था। तो लेकिन मुझे तब जब मैं जब देखा उनको ढाके में उस आर्टिस्ट को, तो तब से मुझे मैंने इच्छा हुई कि मैं आर्टिस्ट ही बनूंगा, एंड मैं स्टार्ट किया। फिर मैंने वर्कशॉप किया वहाँ पे, मेरा एक दोस्त रहता था वहाँ पे, उसके पास जाता था मैं, है स्कूल में पढ़ते पढ़ते, उससे सीखा मैंने स्टिल लाइफ। वहाँ पे एडमिशन का उस टाइम में था दो दो आपके एग्जाम में एंट्री के लिए स्टिल लाइफ ड्राइंग करना पड़ता था, और एक वन कंपोजिशन, Okay. ठीक है? हाँ, तो वन स्टिल लाइफ, वो भी सिंपलिसिटी में, और वो हमको बता दिए थे तो कैसे कैसे करना है। तो मैंने पूरा होल दोपहर के टाइम में वही प्रैक्टिस करते रहता था। मतलब हमको अगर आर्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता तो मेरा लाइफ साइड मतलब बेकार हो जाता, क्योंकि Yes, आई एम वेरी लकी पर्सन। वही मैं आई एम, अगर आप लाइक शांति निकेतन में जाके और शांति निकेतन के बाद अगर आप इधर नहीं आते डायरेक्ट सिंधिया स्कूल, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका सेकंड ऑप्शन क्या था उस टाइम? सेकेंड ऑप्शन तो मेरा जो मेरे मेरे हमने एग्रीकल्चर इसमें एडमिशन लिया था, ओके। सेकेंड ऑप्शन था मेरा गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग वी बिलोंग इन द फार्मर फैमिली, ओके। हम लोग का लैंड है, मैंगो गार्डन है। तो मेरे जो बड़े भाई थे, बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर वेरी अर्ली, ओके, व्हेन आई वाज 9 months old, एंड तो एंड माय ब्रदर एंड माय सिस्टर्स, वो लोग ने हमको पाले हैं। तो कोई मेरे पापा भी नहीं थे, मेरे मदर, आई लॉस्ट माय मदर वेरी वेरी अर्ली, 9 months आई हैव नॉट सीन हर। तो ये लोग मेरे पेरेंट्स थे। तो वो लोग बोले जो आप एग्रीकल्चर कॉलेज में, एडमिशन भी मेरा हो गया था कल्याणी में, नियर कलकत्ता।
तो मैं ये करता, लेकिन मैंने वहाँ एडमिशन छोड़ के मैंने शांति निकेतन में एडमिशन ले लिया फिर ओके सर। आफ्टर। हाँ। अभी जैसे like आप you said that you work as a teacher at Scindia School. So हम्म। keep that as a with the full time job and an art practice, independent art practice happening side by side. How do you balance it, and how do you keep yourself active in the art world, irrespective of having a boarding school station job? हाँ, you are right. Actually, when I joined Sunday school, na, that time art teachers have enough time to do work. Okay, क्या होता था, हम लोग क्लास लिए, क्लास लेने के बाद हम लोग अपना 2 बजे के बाद फ्री हो जाते, फिर गेम्स टाइम होता था। तो उस टाइम में हम काम करते थे 3 घंटा, 3 आवर्स, है ना, आफ्टर स्कूलिंग, है ना, बिफोर गेम्स टाइम। और मैं अकेला उस टाइम में, तो मेरे फैमिली उमिली थे नहीं, मैं अकेला बैचलर था 6 इयर्स। तो मैं ऑलमोस्ट 2 PM नाइट तक काम करता था पूरा, है ना। और ये भी इंस्पिरेशन मुझे इसलिए मिला, जो मेरा पहला शो हो गया था आर्ट हेरिटेज में, उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला एंड एनर्जी मिला काम करने का। एंड आई हैव मेड मेनी आर्टिस्ट। हाँ, जो प्रयाग शुक्ला जी थे आर्ट क्रिटिक, अभी आप जानते होंगे प्रयाग शुक्ला जी को, Yes, नीरू नोज वेरी वेल, yes. है ना। ही वेरी, साहित्य कला अकादमी अवार्ड भी मिला उनको, ही बिकम माय फ्रेंड फ्रॉम दैट टाइम। तो एंड ही एनकरेज मी अ लॉट। इज अ वेरी सिंपल पर्सन, वेरी गुड आर्ट हिस्टोरियन, है ना। तो उसने बहुत यंग लोगों के साथ दोस्ती किया एंड उनने बहुत एनकरेज किया, उसी से हमको काम करने मिला। राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग द मच टाइम बिकॉज आई बिकम एन हाउस मास्टर। तो ओके, है ना। So that's why I have not got much time right now, but I'm planning. I'm after retirement again. I start full time work. Okay. So, just to briefly tell people who are not aware of, the person he refers to, Miss Neeru, is actually the founder of Pranjal Arts, and she was हाँ also हाँ my mother. She's the one who organized a lot of art camps and exhibitions for the artists. And the fact of Scindia School is a very reputed boarding school at the hill of Gwalior Fort, and it's been there since now more than 100 years. And sir yes. working there. So, sir, how long has it been? Like now, how many years have you been painting for? Since if we count Shanti Niketan as well. हाँ, just I pass out from 88. Okay, from Santiniketan, and same year I joined in Scindia school. Okay, even कि मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था मास्टर डिग्री का, एंड आई जॉइंड बिकॉज मिस्टर देव बर्मन, प्रणब कृष्ण देव बर्मन, he was also renowned sculptor, okay, from Santiniketan. He is the student of Ramkinkar Bej. He is the father of modern sculpture, Ramkinkar Bej. Okay, तो उनके जो दिल्ली में रिजर्व बैंक है, यक्षा यक्षी दो दो स्टेचू है ना, यक्षा यक्षी, Yes. उन्होंने उनको उनको कार्व किया है। मिस्टर प्रणब कृष्ण देव बर्मन, डिजाइन बाय रामकिंकर बेज, बट इट्स कार्व बाय प्रणब कृष्ण देव बर्मन। तो उसने मेरा इंटरव्यू लिया वहां पे शांति निकेतन में, बोले आई एम रिटायरिंग फ्रॉम सिंधिया स्कूल। ही वाज आल्सो एक्स सिंधिया स्कूल टीचर, Okay. and he lived, he was the son of Dhirendra Krishna Dev Burman. He was the principal of the Santiniketan. Okay. Okay, so he told me, you want to join Sindhya school because I'm retiring, है ना। तो बोले, and मुझे चाहिए था नौकरी उस टाइम में, So it's है ना। 42 years. Yes, So, sir, yes. आपने कभी like you didn't think that like you want to do something else? Like you loved Scindia at first? No, I love Sindhya very much, and I love this place, Oh, that's Fort. amazing. हाँ, फोर्ट, आई लव फोर्ट वेरी मच। मैंने आज तक एक भी जॉब में अप्लाई नहीं किया नेक्स्ट, है ना, कहीं में भी। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भी मुझे मौका मिला, या सब लोग बोल रहे थे मेरे फ्रेंड लोग जो गो देयर, बट मुझे मेरा मेरा सिद्धांत बहुत क्लियर है। मेरा सिद्धांत है, आई एम लिटिल बिट, आई लव नेचर, जो विच आई एम गेटिंग इन सिंधिया स्कूल, Yeah. है ना। वेरी क्वाइट प्लेस, क्राउड नहीं है, और बच्चों लोग के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव गेम्स ऑल्सो,
है ना. I play games, football, है ना, volleyball, many games. तो इसके लिए मेरे लिए ये आइडियल प्लेस था सिंधिया स्कूल, है ना, फॉर लिविंग, क्योंकि पोल्यूशन फ्री एरिया, नो Yes, झिकझक, है, नो पोल्यूशन, lots of trees, lots of birds, yes, wild animals also, है yes. ना. तो I love this place actually. That is also one of the reason because of I am staying here. That is amazing. Like this kind of consistency that so many years now, like in this Hmm. generation, it's very rarely seen. If like to be, candid with you. Otherwise, now let's talk about your styles of work. Now it's been, you're saying 40 years. It's a very long time. And the last time Pranjal had saw your work was 10 years back. It's there on the Hmm. Hmm. website. Hmm. Have you seen? If you haven't seen our website, you must see that first. Like that is. Yes, yes. So tell us Um, the past 10 years how your work has changed, and obviously since 40 though it's been like it's changed, must have changed a lot. when actually as in we are also doing job na, those who are doing job, not actually why we are working, because of artist life is not very secured in India, okay, and this kind of countries, okay. So those who born very wealthy family, they can afford these things, okay, but you need you need the job also, or because of your livelihood. So I started painting in Santiniketan in canvas, है ना, big tempera, which is called tempera govas. Okay, then I joined Sindhya school, and then I started painting on canvas. Acrylic is the modern medium. That time I pick up that medium, acrylic. Then again it's depend on time also, okay. तो time का जहाँ कमी हो गया, तो I started doing small paintings on paper. I have developed my own style, Okay. okay, with mixed media, which is very everyone knows because of this media, everyone known, and most of the gallery they like my this work, the mixed media painting, which I have developed my own style. uh, I can show you some paintings. Yes, sir. We would love to see some. हाँ हाँ. The Oh, that's beautiful. Nice. So, what all have you used here, like to paint this? I can see. this is pen and ink, okay, then watercolor, then pastels, and different, and I have created my own style. This one, I am known very much because of this style, Yeah, and people, most of the art galleries and artists, they like my this idea, style. I am showing you another painting also. sure, sir. Oh, nice. This is your recent work. Recent work. There's so Yes. much of like it's so good. There's so much of depth there and so many like shades of color. Uh-huh. Yes, and you can see this color also. My color in this painting, the fourth, the ग्वालियर का जो कलर है ना स्टोन का, Yes. हाँ, Mhm. the the color is less here. That has got, yeah, beautiful. Oh, let me. Most of the work though is in the gallery, different galleries, but recent some work with me. I am showing you another good work. Yes, sure, sir. Please do. I have taken these figures, okay, from the sculpture which Tay Temple and this Shasbahu temples, you can see the sculptures figure. So these figures I have just inspired from these figures Okay. and color also.
caste हाँ हाँ people at the Gwalior हाँ Fort. हम्म Wonderful. and very good this and most of the work uh, in Kolkata, Rakhi Sarkar, Hannah, she exhibited and she has taken my most of the work and there's large number of work collected from the uh, Mr. Alkaji. Alkaji, there is the Alkaji Foundation Yes, in Greater Kailash, yes, is yes. there. The foundation Uh, is very famous. So, uh. all otherwise across the country, where else did you say your work is there? Sorry, repeat again. Other than Alkaji Foundation, where else, is your work there? And yeah, tell us that. Mhm. Where else is your work there other than Alkaji Foundation? And one or two work from the National Gallery of Modern Art. Okay. Okay, they have, and most of the work I do not know actually. Galleries they don't disclose where who is the purchaser and this. Okay, they don't tell us because they have a business. And the artist cannot directly link with them. That's why, sometimes they don't tell us where your work collected, who, but the those who purchase work, okay, तो उनका नाम वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत सारे टाइम में जो जो परचेस करते हैं वर्क वो डायरेक्ट आर्टिस्ट के साथ लिंक करते हैं उनसे लेना शुरू कर देते हैं इसलिए Yes, sir. तो बट हम्म Abhi, like latest like work of yours, have you put it somewhere? Like where can people see your work? And no, you were saying something. no, I right now though that's because of pandemic all galleries are online, they're doing work, Yes. okay, like we are talking, but I am doing some drawings, okay, small drawings and some paintings, and but I'm not getting as when I become a house master of the Machi house na Yeah, from yeah, previous year. So as a house master your father knows and your brother also knows, है ना? So we don't find time too much yeah. because we are engaged with the boys, and we cannot say no also to the school also Yes. because it's a duty, है ना? When school So, want. sir, when you paint, what kind of an artist has inspired your work? Like, what all, are there any international artists that you follow? हाँ इंटरनेशनल के बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चंस ओके Paul Klee is a very I like very much Paul Klee Modigliani. Okay, Paul Klee is a very German artist. He also worked Goa's painting, small work, but very, very bright and very abstract. But I don't do abstract work. I do uh, this emotion and just symbolic work. My work is symbolic and figurative, very much figurative, not abstract. But Paul Klee, and of course Picasso, Pablo Picasso. Yeah, Pablo Picasso is, really, I love his like work very much. geometrical shapes of his coming. Yes, yes. And sir, like now, like for my last question, I want to ask is that what kind of people have you noticed are interested in art, in paintings specifically? Because there's a very small audience for paintings now with digital Hmm. media coming about and this. So, Yeah. how do you find like that's a very challenging aspect? So, how do you have you noticed that there are like this section category of people only who are interested in art or like to become an artist or to buy a painting? What change? Very good. Again, it's a good questions. When we are a student in Santiniketan, and you know the KG Subramaniam, Yes, yes. very well known. He got the Padma Vibhushan also. So he was our teacher, luckily. Oh, So he told us, so we have to create interest among the common people. Common people will not come to you when you are going doing job as a school or some college or somewhere when you are meeting common people because very lack.
very less in the awareness of the common people. That is our duty. This is artist's duty to tell them, Yes, express them about art, about aesthetics, about whatever, not only art, music also. है ना? Because just see the classical song, such a rich heritage in our country, okay? Classical song, music. But how many people they understand? Just, and I want to just, many people just, we don't understand classical music and abstract art. Okay, I am not abstract artist, but again, what is abstract art? What yes, is classical music? Classical music, we don't see any word, okay? We yes, see the texture, tone, volume, variation. yes, In, in painting also, it's good painting or abstract painting or any kind of good paintings. You can see the tone, texture, variation, differences, and uniqueness. Every painting will be different. है yes. ना? It's a हाँ, very rare that's why. handmade art, like which is today very like, and it's again another form of make in India and all those aspects which are promoted now by the government and the culture, heritage. How yoga is हाँ, promoted, I think arts and culture and heritage also deserve that sort of limelight there. yes. And in India, we are in Western. What is the difference between Western India, Western art, and Indian art? Western art was before independent was realistic. Okay, they whatever they are seen and they have painted. And after Renaissance, the discovery of the camera, they have left this. But in if you see the Indian art, Indian miniature, Mughal miniature, Rajput miniature, Rajasthani miniature, Pahari school of miniature, any miniature, even कि fresco, even Ajanta Ellora, temples में जितने so everything is totally idealistic, okay? Yes, And Hana, but they were doing it. And now what the India was very rich on art earlier also. yes, Okay. yes, Huh. So this and now everyone want to become a they think the Pablo Picasso once said, well, I paint what I don't paint what I see. I paint what I observe and imagine it. So that's a very that's nice quote, and I think huh, we can like conclude with this thought that it's very important, like huh. art, to promote art in the Indian society, and I think organizations like Pranjal Arts are doing now some parts of it. We've revived ourselves after so many years, and we are starting this series of workshops. We also have this online gallery that people can see, and we are going to do these artist talks. Now this was the first artist talk uh, that we had with you, sir, and I'm so thankful for your time today Thank to you, join Pranjula. Thank you very much. I'm so grateful, and we will support you and Pranjala Arts because Neeru and Sabdi, they are all friends also and very wonderful people. Thank you very much. thank you so Okay. much, sir.